So what are the multi-bagger stocks? Okay. सो मल्टी बैगर स्टॉक्स क्या होते हैं जो हमें 100%, 200% या 1000% रिटर्न देते हैं। ठीक है। मल्टी बैगर मतलब ये नहीं कि आपको 100 टाइम्स ही रिटर्न मिले या 50 टाइम्स रिटर्न मिले, ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू आर गेटिंग 100% return also, then it is also a multi bagger. Okay, it is only a one bagger for you, but still it is a multi bagger. Okay. So to get 1000% of that, more than that return, you need to have too much patience on it and believe on your investment. Okay, then only you will get 1000%. Okay, but if you are getting 100%, 200%, that is, suppose you invested 1 lakh in TCS, and now your capital is showing 3 lakh. So your gain is two bagger. So that is multi bagger for you. Okay. So don't think 100 times and 50 times and all like that. If you are getting 100%, 200%, then that is multi-bagger for you. Okay. So multi-bagger always starts from the 100% or 200%. Okay. This is the ambitious target. Okay. So to get 1000% or more than that like that, then you need to be have like a yogi or some sannyasi or like that. So that you buy the stock and forget in your account and open after 20 years. Okay, then only you will see the real 100 times or 200 times type multibaggers. Okay, so these legends like Junjunwala ji, Damani ji, or Kedia ji, okay, they have multibaggers in their account. Okay, they invested in the stocks and they made some multibaggers. Okay? अब इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने जो है सपोज 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया तो सब 50 के 50 मल्टी बैगर बन गए। ठीक है, ऐसा नहीं है। इनके 50 में से 5 ही मल्टी बैगर बने या 10 ही मल्टी बैगर बने, बाकी 40 जो है वो स्क्रैप हो गए। ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब उसका वर्थ 10% या 20% ऐसा रह गया, लेकिन जो 10 उनके मल्टी बैगर बने 50 में से, वो बने हैं 50 टाइम्स, 60 टाइम्स लाइक दिस। ओके, तो उनका जो लॉस है, जो बाकी 40 वाले ट्रेड में, वो सब वो मल्टी बैगर ने जो है टेक केयर कर लिया है। इसकी वजह से उनका देखो, जैसे इनका इन्वेस्टमेंट है टाइटन में। टाइटन इन्होंने खरीदा है अराउंड 40-50 की रेंज में। ठीक है, आज टाइटन चलता है 1200, 1300। तो कितना टाइम्स हो गया। तो वो एक अकेले टाइटन के ट्रेड ने इनके बाकी के जो ट्रेड का जो लॉस है वो कवर कर लिया है, और प्लस इनको अच्छा रिटर्न भी दिया है। ठीक है, बाकी ऐसा ही स्टोरी ये दोनों का भी है। ठीक है, तो ये लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। वो बिजनेस में बिलीव करते हैं कि ये बिजनेस आगे जाके ग्रो करेगा और हमको पैसा देगा, तो ये मल्टीबैगर बन सकता है। हाँ, उनका आइडियाज भी फेल हो जाता है, ऐसा नहीं कि सबकी सब आइडियाज ही उनके अच्छे हैं। So their ideas also failed. If you go and study today Rakesh Jhunjhunwala portfolio and his investment, okay, then you will find his success ratio is merely 20%. Okay, 80% of his investment failed, but that 20% investment grows his wealth by more than 50 times or 60 times or 100 times like this. Okay, so uh, so in this way only you can catch multi-baggers. You cannot catch multi-baggers like I selected 5 stock today and 5 will be 100 times. This is not possible. Okay, only one or two will be will give you success. Other three will fail, and this is highly impossible that you select all the stocks and all will be the multi-bagger. Okay, but while selecting the stocks for the investment, you should have some criteria. Okay, based on that you will invest. Okay, and you will invest only those capital that you will not need for in next 3 4 5 years. Okay, so you are not going to invest all your capital on one stock and thinking that it will be multi-bagger like this. So don't do that. You will invest only the capital you will not require for next for 5 years at least. Okay, so in this way, this is the best way, because if tomorrow stocks went down 50%, you will not be in depression. Okay. So
means if your capital is extra capital you are investing, and if you invest your emergency capital or something like that, and tomorrow stock went down 20% after your investment, you will come in depression, okay, and you will square off it, and you will lose your 20% of your capital, okay. So don't do that. Invest only the capital in the stocks which you didn't require for next 3 4 5 years, okay. So story about these legends, I already told you. All their investment didn't grow multi-bagger. Only 20% of their stocks become multi-bagger. Rest 80% they failed badly. Okay, but that 20% is their alpha, because they made more than 50 times or 60 times return on their investment. So to catch the multi-bagger, we need lot of patience. Okay, like my example, I will give. You know the stock called LTI, L&T Infotech. Okay, that stock at 750, I was having huge quantity at that time. Price was 750, and I invested around 16 lakhs on LTI. The LTI stays in the range for 6 months like that, only 750, 740, 750. So after 6 months, I thought it is not going to move, and I removed my capital. And after I remove my capital, it started means increasing. Okay, and now the price is 4,000 plus. Okay, now the price is 4,000 plus. So if I kept my investment as it is like this, then I will be having 4 times or 5 times gain. Okay, so my 16 lakhs will become around 80 lakhs, something like that. Okay, so but I lose my patient and I exited my position. Okay, so you really needs to have a lot of patience on your investment. Okay. If you believe LTI is going to perform in the future, if you believe on the business of LTI, then stay invested. Don't look at the daily fluctuations. Okay. Ignore that daily fluctuations noise. Okay. So your vision is long term. So believe, stay in the long term vision. Okay. So really you needs to have a lot of patience. I will show you on the charts also why patience is required. Okay, you should have long term vision. This is very important. Suppose today I told that this XYZ stock will become multi-bagger, and tomorrow you invested in XYZ stock, and that XYZ stock didn't move for next 1 year. It stays there. Okay, so what will happen? You will lose your patience. You will lose your long term vision. You think that my capital is getting idle now, so better I will remove this capital and I will shift to some other stock. And when you remove your capital, then that XYZ stock will start growing up. So nearly these 2 points are very important: patience and long term vision. You should believe in the company business. Okay, you means when you are investing, invest like it's your own company. Okay, suppose you want to buy anything like TV or cloth for you, something like for you, you went to the shop, you see a lot of clothes, okay? Then only the few, okay? Only the few stock clothes that you like, you will select that, like, okay? So in the stocks also, there are hundreds of stocks in front of you, okay? So you should have some specific criteria to choose stocks for the investment. Okay. Once that stocks fits in your specific criteria and you believe on the company business, okay, then stay invested in that company business. Okay. Unless and until the company deviates from your parameters. Okay. Like for example, I will give you one parameter. Okay. Like debt. Debt to equity ratio should be less than 0.5%. Okay, but if company debt to equity ratio is uh, more than 0.5%, that is company taken the debt,
it violates your parameter. Okay, then that is your exit point. Okay, so unless and until any company deviates from your parameter, okay, stay invested in that company. If they deviate, exit and find another company. Okay, so this is the belief in the company business. You should invest like this is your own company. Okay, not others. And this is most important point. Avoid daily fluctuations. Okay, so like Infosys story I told you, that whistleblower news crashed the stock up to 480. Okay, but the long time investors, they bought at 480, they didn't sold. Okay, so they believe on the company business, so they avoid these daily fluctuations. Like stock went up 5%, went down 10%, they don't care about these daily fluctuations. Okay, so they have long-term vision, they have patience, they believe in the company business, so they don't see these daily fluctuations. If you see your portfolio daily, then either you will book 20% profit and exit the stock, and after that the stock will become 100% or 200% like this. Okay, or stock will be minus 20% one day, then you will be panic and you will book the loss and 20% of your capital will be gone. Okay, so in the daily fluctuations you will also fluctuate daily, so don't look at the daily fluctuations if you are long term investor. Okay, if you really wants to have multi-bagger in your account. So most important is wealth creation is a slow process and it takes time to make money. Okay, so it is very slow process. It really takes times to make money. It is not like bank nifty option. Today you will invest 1 lakh and at the end of the day the option will become 10 times and it will be 10 lakh. It is not like that. Okay, so if you are long time investor, wealth creation is a slow process. Even the Warren Buffett, his portfolio is growing 15 to 20% annually. Okay, so for them 15 to 20% is enough for them. Okay, so target yearly only 15 to 20% if you are long time investor. Don't target 100%, 200% like this. Okay, this is not possible. And if you study this Rakesh Jhunjhunwala ji, his story and all that, their portfolio also increases CAGR 20% or 25% like this. So it is highly impossible to grow 100% or 200% if you have portfolio. Okay, if you have concentrated bets like you invested only in Bajaj Finance, one stock in your portfolio at suppose let us say 100 rupees and now it is 5000 rupees. Okay, that is a different story. But if you have diversified portfolio, then it will grow at the maximum 20-25% is it is giving, then it is excellent returns for the diversified portfolio. So why the normal traders unable to catch multi-baggers? Okay, so every one must have heard this story, the hen and the golden eggs. सब लोगों ने ये स्टोरी पढ़ा होगा, the hen and the golden eggs. ओके, सो इस ये स्टोरी में क्या है कि ये जो hen है, ये रोज दो सोने के अंडे देती है. ठीक है, तो ये जो आदमी है जो hen को देख रहा है, इसको रोज दो सोने के अंडे मिलते हैं. ठीक है, तो ये सोचता है कि यार ये तो रोज दो दे रही है, मैं अभी इसको काट के जो है इसके अंदर के सब अंडे निकाल देता हूँ. मुझे रोज दो अंडे नहीं चाहिए, मुझे एक ही बार में सब चाहिए. ठीक है, तो वो क्या करता है, मुर्गी को काट देता है और मुर्गी को मार देता है, उसमें कोई अंडा नहीं निकलता है. तो इसलिए जो ये जो स्टोरी है इसका कहने का मतलब ये है कि जो स्टॉक आपको सपोज हमने बोरोसिल लिया है स्टॉक, बोरोसिल 20% सर्किट मार दिया, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यार 20% रिटर्न मिल गया मैं निकल जाता हूँ. ठीक है, लेकिन वही बोरोसिल को 20% पे बेच के ये लोग वो जो बोरोसिल जो मुर्गी है एग्जाम्पल उसको काट दे रहे. ठीक है, वही 20% रिटर्न आपका 100% रिटर्न भी हो सकता है. ठीक है, तो बोरोसिल जो है, जो मुर्गी था, जो सोने की अंडी देने वाली मुर्गी था, उन्होंने 20% पे उसको खत्म कर दिया. ठीक है,
तो ऐसा नहीं करना है। अगर स्टॉक भाग रहा है आपके पोर्टफोलियो में, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब उसमें दम है, उसमें बाइंग आ रही है, ठीक है। तो उसमें आप पेशेंस रखो, वो स्टॉक ऊपर ही जाने वाला है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि वो 20% बढ़ के जो है आपका नीचे जाके स्टॉप लॉस भी हिट करे, हो सकता है, रेयरली होता होता भी है, प्रैक्टिकली होता भी है। और आप बाद में करते हैं कि यार मैंने 20% लिया नहीं है और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। लेकिन आगे जाके वो अगर 100% हो गया तो आपके ऐसे 10 स्टॉप लॉस टेक केयर करेगा, ठीक है। तो जो स्टॉक भाग रहा है इसका मतलब उसमें बाइंग आ रही है, तो उसमें बने रहो, ठीक है। उसको ये मुर्गी की तरह मत काटो कि जो है आपने जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी काट दी, ठीक है। अभी बोरोसिल हो गया या अडानी एंटरटेनमेंट हो गया, ऐसे कुछ जो स्टॉक्स है जो काफी भाग रहे हैं, अडानी ग्रीन हो गया, टाटा हो गया, ठीक है। बहुत सारे इन्वेस्टर इसको लो लेवल से लेके रखे हुए हैं, ठीक है। उन्होंने 100% हो गया तो बेचा नहीं है, अभी भी उनके पास पड़ा हुआ है वो स्टॉक, ठीक है। लेकिन क्यों पड़ा हुआ है, उन्होंने उनको पता है कि अभी ये जो है इसमें बाइंग आ रही है, ऊपर जाएगा, ठीक। कुछ कुछ जो लोग 20% गेन पे एग्जिट हुए हैं वो दोबारा एंट्री नहीं मारे, ठीक है। क्योंकि एक बार अगर हम 20% पे सपोज, बोरोसिल है अभी 200 रुपीज है, ठीक है। टू कल जाके 220 हो गया, मैं एग्जिट मार दिया उसको 220 पे, ठीक है। लेकिन परसों जाके अगर वो 240 हो जाता है, 260 हो जाता है, तो मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे बाइंग प्राइस से वो ऊपर है, अभी 240 है, 260 है। मेरा मन ही नहीं करेगा कि मैं उसमें एंट्री लूँ, ठीक है। मैं अगर सपोज उसमें एंट्री लेता हूँ 260 पे, तो हो सकता है कि वो कल जाके 200 पे आ जाए, या ऐसा डर रहेगा मुझे। और ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है ऐसा, ठीक है। तो एक बार अगर आपने 200 में लेके 220 पे बेचा, तो आप 260 पे एंट्री नहीं लोगे कभी, ठीक है। तो लेकिन अभी अगर 200 पे आपने ये लिया है और 220 गया, 240 गया, 260 गया है, एक बार ऊपर ऊपर गया, ठीक है, आपके पोर्टफोलियो में पड़ा है, तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। तो जब भी आपको किसी स्टॉक में आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिखे, उस टाइम में आपको बहुत कंट्रोल करना है आपके इमोशंस पे। आपका मन करेगा कि मैं उसको बुक करूं, बुक करूं, बुक करूं, बुक करूं, बुक करूं, ठीक है। लेकिन बुक मत करो, कोई एग्जिट एग्जिट स्ट्रैटेजी बनाओ कि यहाँ पे आएगा तो भी मैं एग्जिट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, ठीक है। एग्जिट के साथ में मेरा भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने भी अच्छे अच्छे स्टॉक में एग्जिट मार के जो है मेरा खुद का काम खराब किया है, ठीक है। तो लेकिन मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ कुछ लास्ट कुछ दिनों से, तो मेरे पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स ने 100% रिटर्न दिया है, ठीक है। ये इसकी वजह से हुआ क्योंकि मैंने मेरा इमोशंस कंट्रोल किया, और कुछ नहीं किया मैंने, कुछ मैजिक नहीं किया मैंने मेरे साथ, ठीक है। तो ये आपको आपको आपकी इमोशंस को बहुत कंट्रोल करना है, ये मुर्गी की तरह नहीं काट देना है। जो स्टॉक आपको रिटर्न दे रहा है उसको मत काटो, ठीक है। उसको होल्ड करो, उसके अंडे लेते रहो, वही एंजॉय करो। वेल्थ क्रिएशन इज अ स्लो प्रोसेस, नॉट अ फास्ट प्रोसेस, ओके। So till now webinar is going okay, or you need some changes or something like that, like language you are understanding, the process you are understanding, is it okay? So okay, so now we will select some of the multi-bagger stocks examples, okay. Yeah, some of the multi-bagger stocks examples, how they become the multi-bagger, okay. So without wasting the time, we will directly go on their charts, okay. So this is the Asian Paints, okay. Asian Paints become the multi-bagger. For 10 years, almost 10 years, the stock did nothing, no action. Okay. If you are invested here, then your capital is almost same like that up to here. Okay. But after 10 years, see the move 22 times. Okay. And it never come down. Always up, 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 and up. And who knows, tomorrow it will be 220 times. Okay. So now it is to 2844 rupees. Okay. Who knows? Maybe after 5 years, it will be 1 lakh rupees.
like हमारे. Okay, so who knows? So nobody knows about the future, but the right now the stock is going in the momentum. Okay, so after 5 years maybe you will see this Asian Paints 1 lakh rupees. No surprise to me. Okay, so this is the Asian Paint story. For 10 years it did nothing, and after that it is making only higher and higher and higher. Okay, the first sign जो है मल्टी बैगर बनने का वो होता है जब भी वो अपना फर्स्ट फ्यू इयर्स फ्यू इयर्स का ये जो जोन है 10 इयर्स वाला, ठीक है, इसका मल्टी ईयर ब्रेकआउट देता है, वो फर्स्ट साइन है. ठीक है, जब भी स्टॉक कोई मल्टी ईयर ब्रेकआउट देता है, इसका मतलब वो स्टॉक के कंपनी में फंडामेंटल्स में ऐसा तो भी कुछ चेंज हो रहा है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्टेड है. ओके, सो जब भी मल्टी बैगर्स ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट आता है उसमें, ठीक है, और इसका मतलब उसमें डिमांड है, स्टॉक डिमांड में है, बाइंग आ रही है, उसमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ रही है, तभी स्टॉक जो है मल्टी ईयर ब्रेकआउट देता है. ठीक है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया जो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने का है वो है मल्टी बैगर, ये जोन में, लोअर जोन में. ठीक है, जब भी स्टॉक मल्टी बैगर बनने के साइन, लाइक यहाँ पे एशियन पेंट्स यहाँ पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था, सपोज इन केस दिस इज द 200 रीजन. ओके, यहाँ पे जब स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, ठीक है, उस टाइम में ये स्टॉक इतना फेमस नहीं था एशियन पेंट्स. ओके, ठीक है, उस टाइम में हो सकता है कि इतना फेमस नहीं हो अभी जितना एशियन पेंट्स फेमस है. ठीक है, उस टाइम में लोग सोच रहे हो कि यार कोई पेंट की कंपनी है लेकिन स्टॉक अभी 200 पे है, बहुत महंगा हो गया अभी, तो मैं इसको नहीं खरीदूंगा. ठीक है, आई विल नॉट बाय, दिस इज वेरी कॉस्टली, इट इज 200. ओके, बट द इंस्टीट्यूशंस, they know about this company Asian Paints. Okay, so they know that is why the buying is coming and it has given the multi-year breakout. Normal retail traders, they didn't understand this. Okay, so whenever any stocks giving multi-year breakouts, okay, at that time, like this is the 2007, in the 2007 Asian Paints given the multi-year breakout. Okay, and stock price was 200. Maybe that time it is not famous stocks or something like that, and people think 200 is very costly. But now if you see the price, this is 2844. Okay, so almost means 10-20 times from here. Okay, so nobody knows stock will be the multi-bagger. लाइक जो प्रेजेंट केस है, आज की डेट में कुछ स्टॉक्स ने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है. ठीक है, लेकिन आज की डेट में वो स्टॉक उतने फेमस नहीं है, लेकिन 10 साल बाद अगर देखोगे तो हो सकता है कि वो स्टॉक बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए, हो सकता है कि वो स्टॉक 10 टाइम्स 20 टाइम्स हो जाए. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्टॉक अभी फेमस हो, ज़्यादा फेमस हो, कुछ हो. ठीक है, लेकिन अगर 10 साल बाद देखोगे तो वो फेमस हो जाएगा, उसमें ये है. तो फर्स्ट साइन जो होता है मल्टी बैगर बनने का वो होता है मल्टी ईयर ब्रेकआउट. जब भी कोई स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है तो उसमें आप एंट्री ले सकते हो. ठीक है, वो फर्स्ट साइन होता है. बाद में जो ब्रेकआउट देता रहता है, जैसे ये ब्रेकआउट दिया, फिर ये ब्रेकआउट दिया ऊपर गया, फिर ये ब्रेकआउट रिटेस्ट ऊपर गया, ये इसमें आप ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले सकते हो. जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ पे नहीं लिया तो मैं यहाँ बाय नहीं करूंगा. ठीक है, तो ये ब्रेकआउट पे भी बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से भी देखो ये स्टॉक मल्टी बैगर ही हुआ है. हु नोज, अभी इसने यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया है, तो मैं इसको बाय कर सकता हूँ क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया है. ठीक है, हो सकता है कि वो यहाँ से 1 लाख रुपए हो, मुझे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन हो सकता है. बहुत स्टॉक हुए भी है, जैसे हमारे हुआ है 1 लाख तक. ठीक है, पेज इंडस्ट्रीज जो अंडरवियर बनियान बनाता है कंपनी, ठीक है, वो भी 38,000 तक गया है. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि कोई भी स्टॉक जो है मतलब उसका जो लिमिटेशन है, ऐसा नहीं है. कल जाके एशियन पेंट्स 1 लाख भी हो सकता है. ठीक है, बजाज फाइनेंस देखो 17 ईयर्स तक कुछ नहीं किया. ठीक है, ऑलमोस्ट एक रेंज में रहा 17 ईयर्स तक, लेकिन 17 ईयर्स के बाद देखो इसने कैसा मुंह दिया, 100 टाइम्स. ओके, सो आपने अगर यहाँ इन्वेस्ट किया है तो 17 साल तक, 17 ईयर्स तक आपका जो फंड है वो ऑलमोस्ट स्टेबल है, कांस्टेंट है. ठीक है, तो आप ये सोचेंगे कि यार मैंने पैसा डाल के बहुत बड़ा गलती किया, लेकिन जिस टाइम में आप एग्जिट लेंगे उस टाइम में देखो, उसके बाद देखो कैसा मुंह दिया. ठीक है, तो इसलिए इसने भी देखो ये यहाँ पे इसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है. हो सकता है कि 2014 में बजाज फाइनेंस के जस्ट
कुछ दो चार स्टॉल आपको दिखते होंगे आपकी सिटी में, बजाज फाइनेंस ऐसा वैसा, ठीक है। लेकिन इसमें देखो, जब ये मल्टी बैगर मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया, उसका मतलब है कि इसमें मल्टी इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ रही है, ठीक है। जब इंस्टीट्यूशनल बाइंग आती है तभी जाके स्टॉक ऐसा मुंह देता है। हमारे रिटेलर के 100 200 500 स्टॉक से नहीं ऐसा मुंह आता है, ठीक है। तो आपको स्टॉक में देखना पड़ेगा कि कहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ रही है, ठीक है, कहाँ पे ऑपरेटर लोग इसमें एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। तो वो ऑपरेटर को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि ये ऑपरेटर अभी इसमें घुस गया और ये स्टॉक आगे जाके बढ़ेगा, ठीक है। तो जब भी कोई मल्टी मल्टी ईयर ब्रेकआउट देता है, वो फर्स्ट साइन होता है कि वो आगे जाके और हाई बनाएगा, ठीक है। तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे आप पर्टिकुलर रिस्क रिवार्ड आपका कैलकुलेट करके आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि बहुत सारे ब्रेकआउट फेल भी होते हैं। स्टॉक आज ब्रेकआउट दिया, कल जाके फेल हो गया और 40% नीचे भी आया, होता है ऐसा, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि आपको जो है एंट्री नहीं लेना है। जब भी ब्रेकआउट देगा रिटेस्ट पे आप मिनिमम रिस्क रिवार्ड के साथ एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो आपको एंट्री लेना भी आना चाहिए, जरूरी नहीं कि, ठीक है, बहुत सारे ब्रेकआउट फेल भी होते हैं। तीसरा स्टॉक देखो, पेज इंडस्ट्रीज। हाँ, ये देखो इतना साल तक इसने कुछ नहीं किया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद देखो मल्टीबैगर। तो फर्स्ट साइन कोई भी स्टॉक का जो है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट फर्स्ट साइन है, जो वो अ, अ, मतलब मल्टीबैगर बन सकता है। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि इसमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ओनली मल्टी ईयर ब्रेकआउट, वॉल्यूम, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, ये सब देख के आप पता कर लो कि इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये सब पैटर्न्स है। तो ये सब चीज़ें से आपको पता चल जाएगा। और जरूरी नहीं कि वो कंपनी उतनी फेमस हो या उसका नाम बहुत खराब हो, ठीक है। तो आप उसमें एंट्री नहीं लो। मुझे उसका नाम ही पसंद नहीं है, लाइक पेज इंडस्ट्रीज मेरे स्कैन में आया था, लेकिन मुझे लगा यार ये क्या चड्डी अंडरवियर बनाता है, नाम भी पेज इंडस्ट्रीज है, मैंने नहीं लिया। लेकिन स्टॉक देखो कितना ऊपर चला गया। तो ये सब मत देखो, ओनली प्राइस को देखो। प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो घुस जाओ उसमें, ठीक है। नाम, कंपनी का नाम, बिजनेस, ये सब, बिजनेस तो देखना ही है, लेकिन बाकी फैक्टर, मतलब ये नहीं जरूरी नहीं कि उस टाइम में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो कंपनी फेमस हो। अवंती फूड्स, ठीक है, एक टाइम का स्टॉक है। मुझे लगा अवंती फूड मतलब कोई छोटा मोटा कंपनी होगा यार, ऐसा वैसा, उसमें मैंने एंटर ली, लेकिन स्टॉक काफी भागा उसके बाद, ठीक है। तो वो सब आपके जो माइंड में बायस है, वो आप छोड़ दो। कंपनी का नाम, ये बिजनेस वैसे, ठीक है। हो सकता है कि वो कंपनी उतनी फेमस, लेकिन आपके अगर क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, जैसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ रही है उसमें, आपके जो फंडामेंटल 4 5 पैरामीटर है, उसमें वो कंपनी बैठ रही है ठीक से फिट, आपने चेकलिस्ट बना दिया है, ठीक है, कि ये डेट टू इक्विटी रेशियो पास, ईपीएस ग्रोइंग 25% पास, market cap pass, P buy ratio, your selection ratio, like this, okay. So 4 5 ratios, fundamental parameters you keep aside, okay. Then you just tick mark it, okay, my this all this fundamental parameter pass and stock has given multi year breakout, so I am going to invest here, okay. So like this you can prepare one checklist, and if the stock is passing all your criteria, then you can invest, okay. So, what is the learning? How to identify multi-baggers from the technicals? Okay. Whenever any stocks giving multi-year breakout, select that candidate. Okay. So, at that time, you may think the stock price is costly and company is infamous. Okay. But that company may be future multi-bagger. Okay. So, keep this in mind. Take calculator risk, invest only the spare capital. Invest only the spare capital means the capital you won't need at least for next 3 years or 4 years, like this. Do not invest in your capital, emergency capital, okay. So look at the fundamentals, okay. Some of the fundamentals like uh, healthy growth in the earning. Healthy growth in the earning means EPS.
earning per share. Okay, high margin business. Okay, high margin business means return on capital employed. Okay, strong promoter holding. Promoter holding, if it is more than 60%, then it is very strong promoter holding. Okay, because promoter have the faith on their business. That is why they kept lot of quantity with them. Okay, so that is one of the very good parameter. They do not want to give quantity to the others or shares to the others. That is why the strong promoter holding is one of the criteria. Okay, if you selected debt free business, then it is very good. ओके, जो भी कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, क्यों कर्जा नहीं है, पहली बात वो कंपनी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो कंपनी का बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, उसको कंपनी के बिजनेस से ही इतना प्रॉफिट मिल रहा है, उसको एक्स्ट्रा कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी डेब्ट फ्री है, तो ये बहुत अच्छा क्राइटेरिया है, ठीक है। अनदर क्राइटेरिया स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल मैनेजमेंट। ओके, अब इसमें देखो, जैसे टीसीएस का मैनेजमेंट है, इन्फोसिस का मैनेजमेंट है, एचडीएफसी बैंक का मैनेजमेंट है, वो बहुत स्ट्रांग है और कैपेबल है, उन्होंने हर बुरे टाइम में अच्छा परफॉर्म किया है। लाइक कोरोना क्राइसिस, पूरी दुनिया में इतना निगेटिविटी था, लेकिन वो लोग बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आए, ठीक है। एचडीएफसी बैंक देखो, इतना 3-4 महीने का लॉकडाउन हो गया, लोगों का पैसा जॉब चला गया, ये चला गया, लेकिन उनके लोन में ग्रोथ वैसा ही है, प्रॉफिट में ग्रोथ वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। जैसे कोटक बैंक हो गया, उदय कोटक, वेरी स्ट्रांग मैनेजमेंट, ठीक है। एल एंड टी हो गया, एल एंड टी ग्रुप, वेरी स्ट्रांग मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए कंपनी में, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब क्या है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो कुछ यूनिक होने चाहिए। जैसे डिविज लैब है, डिविज लैब एपीआई मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, मतलब फार्मास्यूटिकल के जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैन्युफैक्चर करती है, तो उनका अपना एक एडवांटेज है, ठीक है। पेज इंडस्ट्रीज है, उनका जो प्रोडक्ट है, देखो अंडरवेयर बनियान, उनकी कितनी डिमांड है मार्केट में, ठीक है। तो उनका एक अपना जलवा है, ठीक है। एक कॉम्पिटिटिव एज होनी चाहिए, जैसे टीसीएस है, हनीवेल है, या एल एंड टी है, इनका जो ब्रांड है मार्केट में बहुत अच्छा है, ठीक है। कोई भी कंपनी को अगर कुछ सॉफ्टवेयर का कुछ बनाना है, तो वो टीसीएस या इन्फोसिस के पास ही जाएंगे, या विप्रो के पास जाएंगे, वो किसी फालतू फालतू कंपनी के पास नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सो हमको कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स पे भी ध्यान देना है, ठीक है। तो फंडामेंटल पैरामीटर्स में क्या क्या ध्यान देना है, तो ये सब है ये, ठीक है। ये सब पैरामीटर अगर क्वालिफाई किए, तो हो सकता है कि वो कंपनी आगे जाके मल्टीबैगर बन जाए, ठीक है। अब जैसे अ, ये फंड सारे पैरामीटर आपको कहाँ पे मिलेंगे, सारा पैरामीटर आपको screener.in करके एक वेबसाइट है, वो वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। वो बहुत अच्छी वेबसाइट है, उसमें आप मतलब ये स्टॉक्स देख सकते हो, सब पैरामीटर देख सकते हो। ये स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, वहीं से लिया है, जैसे केपीआर मिल से, ठीक है। अब ये मार्केट कैप 6666 है, पी बाई रेशियो 18% है, आरओसी देखिए 20% के हिसाब से ये ग्रो कर रहा है अपना कैपिटल भी और इक्विटी भी, ठीक है। तो बहुत अच्छा रिटर्न है। और प्रॉफिट देखो कितना है, डेप्ट देखो कितना कम है मार्केट कैप के हिसाब से, ओनली 0.8%। ओके, सो ये स्टॉक जो है ईपीएस देखो 50% है, और वो 20% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, ठीक है। और इसका मतलब ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। और ये सब पैरामीटर आपको दिखेंगे ओनली screener.in पे, और उस पे आप पैरामीटर पे आप भरोसा कर सकते हो। बहुत लोग ये यूज करते हैं स्क्रीनर। ओके, दूसरा क्या देख सकते हो, जैसे केपीआर मिल्स का ही देखो, ठीक है। अब ये लोग क्या है, ये सेवन, व्हाट द सेवन कंपनी, दे आर केपीआर मिल्स कॉम्पिटिटर्स। ओके, सो आप अगर पी बाई ई रेशियो देखोगे इसका 18 देखो, और बाकी का देखो, पेज का 168, इसका 26, 46, सो कंपैरेटिवली केपीआर मिल्स चीपर है बाकी सबसे, ठीक है। ओनली किटेक्स गारमेंट इज चीपर देन केपीआर मिल्स, बट कंपेयर टू अदर्स केपीआर मिल्स इज चीपर,
PBI ratio less means company is available at cheap valuation. Okay. सो केपीआर मिल्स यहाँ भी हमको फेवर कर रहा है, बाकी कंपनी के हिसाब से इसका स्टॉक जो है वो चीप वैल्यू में अवेलेबल है। ठीक है, कॉम्पिटिटर, आई मीन कॉम्पिटिटर। ओके। और प्रॉफिट एंड लॉस में देखोगे तो ये यहाँ पे आपको मेन चीज देखनी है, एक तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयरली ग्रो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, आप अगर यहाँ देखोगे तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयरली ग्रो हो रहा है। ठीक है, और दूसरा ईपीएस देखो, ईपीएस देखो 6, 9, 13, 83, 27, 38, 39, 46, 54, बढ़िया से ईपीएस इंक्रीज हो रहा है, हर साल ईपीएस बढ़ा रहा है कंपनी। इसका मतलब कंपनी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, और आगे जाके जो है ये अच्छा काम कर सकता है। तो आपको अगर केपीआर मिल्स जैसी कंपनी में मल्टी ईयर ब्रेकआउट मिलता है और उसमें आपके ये सब फंडामेंटल पैरामीटर्स आपको अच्छे मतलब दिख रहे हैं, पास हो रहा है आपके फंडामेंटल पैरामीटर्स में, तो आपको केपीआर मिल में एंट्री लेनी है। ठीक है, हो सकता है कि वो आगे जाके मल्टीबैगर बन जाए, हो सकता है कि केपीआर मिल आगे जाके पेज इंडस्ट्रीज बन जाए, जैसे 36,000 हो जाए, अभी 900 पे है। अभी 900 पे आपको बहुत महंगा लग रहा है केपीआर मिल्स, और आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा केपीआर मिल्स का। ठीक है, तो हो सकता है कि, लेकिन स्टॉक ने अगर मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है और ये सब फंडामेंटल पैरामीटर आपके पास कर रहे हैं, तो आपको उसमें यू हैव टू एंटर। ओके, so don't believe in other thing, believe in only fundamentals and technical multi-year breakout. Okay, who knows, the stock will be next page industries, like 900 rupees will become 40,000 rupees, who knows, anything can happen. Okay, so these are, this is the how to see the fundamental parameters and technical parameters. Okay, now uh, some of the multi-bagger ideas from my side. Okay, first multi-bagger idea is KPR bills. Second idea is Goldiam, price 229. Then the Sila foam, price is 1967. Nucleus software, I think, what happened here? Okay. Fourth is Mazgon Dock Shipbuilders. Okay. These four stocks plus two stocks that is newly listed. One is Happiest Mind Technologist and another is Root Mobile. Okay. So these six stocks, as per me, they will be the future multi-bagger. Okay. Maybe they will be the future multi-bagger, or maybe means it is just only a chart, means my analysis. Okay, and I analyze based on some fundamental parameters and some of the technical parameters. Okay, so these are the six ideas. As per me, these will be the future multi-bagger stocks. Future multi-bagger stocks means, do not think they will give 50 times or 100 times return, but they may give 2 times or 3 times return in next 4 5 years, if you take the conservative targets. Okay, so they may grow 2 times or 3 times in next 4 5 years. Okay, so this is also a multi-bagger. If you think every stock will be like Bajaj Finance or something, no, who knows, one of the stock may be like this Sila Home. Their product is, sleep well, it is everywhere in demand, even in the India, in outside India, sleep well product is in demand. Okay, so they have the competitive advantage on the others. Okay, so that is why this Sheila Foam, they are making sleep well mattresses, and this stock is means entered in my criteria. Okay, so who knows, Sheila Foam 1900 now maybe
30,000 after 5 years, maybe, or maybe it will be just 3,000 after 5 years, okay, or maybe it will stay 1,900 for next 5 years, okay. But right now, this company fits in my criteria, okay. That is why it comes in my, I mean, in my list, okay. We cannot predict the future, but we can judge the present, okay. So as per my criteria, this Sila Foam, KPR Mill, Goldiam, Masgon Dock, okay, and two more companies. One is Happiest Mind Technologies and one is Root Mobile, okay. So these two companies, these six companies are fulfilling the criteria. So now we will go one by one. KPR Mills, okay. KPR Mills just given multi-year breakout here, okay, at 957, just given multi-year breakout, okay. So if you will get entry around on the retest or somewhere like this, okay, so it is good entry, okay, so it is good entry. So this KPR Mills, their fundamentals are good, uh, passed all of our criteria and it has given the multi-year breakout, okay. So this is very good stocks. Fundamental like this I already shown for the KPR Mills, okay. Right now price is 957, EPS is 50.6. From here you can take EPS, okay. P by ratio from here you can take, okay. Then EPS is growing 20%, 20%. After 5 years stocks may be 2,381 rupees. This is as per fundamental prediction, okay. So after 5 years this 957 rupees will be as fundamentally, if EPS growing at the 20%, then it should be 2,381 rupees, okay. So it is more than two times like this. So it is one of the multi-bagger. So this is conservative target I am giving, okay. But this is only just prediction, huh? Another stock given multi-year breakout is Goldia, okay. It has given multi-year breakout here at 184. Now the stock trading at 229, okay. If you are getting entry at 184 on the retest or some you can okay, good entry, then you can buy this stock. So this also given multi-year breakout. Then about the fundamental, market cap is only 500 crore. Okay. Company is growing around 15%, 11% at the rate. P by is 13. Okay. Debt is very less on the company. Okay. Almost debt free company. Okay. Problem with this company, why this ROCE, ROE low, if you look at the detailed parameter on the screener, if you go, their EPS started doubling from last year only. Before that, company business was almost stagnant. Okay, so their EPS started doubling, almost doubling from the last year. Okay, that is why this ROE, ROC is low. If they start doubling like this, okay, then EPS is like catalyst, like means you know uh, like a fuel. The more the EPS coming, the company price will keep on rising. Okay, so EPS is very important. Company EPS is started doubling from the last year. Go at the screener.com. You will see Goldiam. Okay, uh, so this is the this fundamental parameter. And as per my fundamental model, after 5 years it should be 460 rupees from 230 now. Okay, Sheila Home, the example I given. Okay, this is the perfect entry. If you see multi-year breakout here, 1967 rupees. Okay, multi-year breakout, Sheila Foam. Okay, Sheila Foam in my channel I given by around 1600 rupees, and we buy it also. Okay, so now it is 1667 rupees. When stock was here, I was given buy. Okay, so now 1967 rupees. Here also you can enter because it is nearly just in this breakout line. Okay,
So you can take calculated risk here and you can make an entry. Sheila. About the fundamentals, see P by E 51, uh, capital growing around 23% if you take the minimum also, debt very less, okay. And if you see after 5 years as per fundamental parameters, this stock will be 5,540 rupees, okay, from 1,600 1968 now, okay. So this is the conservative target, okay, and this is just the prediction. Then Mazgon Dock, this is very good company, shipbuilding company, okay, building and maintenance. Uh, this has just given the breakout. This is not multi-year breakout, but from the listing, this stock listed just before a few months, okay. But it has given the breakout and company is very good, okay. And company prices are available at 217 rupees only. If you look at the company fundamental parameters, company is debt free, zero debt, no debt. That means company is performing really good. Okay. See the market cap 4,471 crore rupees and company net profit. Look, market cap and net profit. Okay. Huge. It is huge profit. Okay. And company is growing 25% ROC and 15% ROE. Okay. If you take average 20% also in between, okay, and EPS is 23 now, okay, P by 9 now, and then after 5 years this model predicting 550 from 220, okay. But another advantage with this company is uh, means company pays dividend very good. Here it is showing zero because company is new now, but company is giving good dividend, okay. So this is one of the stocks which I think will be good performer in the future, okay. And this is the best stocks amongst all, okay. I believe this happiest mind, their price is wrong, 220, okay. This price is 344, happiest mind. This is software company, okay. Now it is trading at 344 only. But if you look at the fundamental parameters, okay, like their capital market cap is now 5,000 crore, okay. P by E 61, okay, it is okay. But look at this ROE and ROC, they are growing more than 40%. Although the company is new, okay, but from the gray market, they study their past data also when they post IPO and all that. So as per them, it is growing more than 40% and here 80%. Okay. So the growth is huge. Uh, Net profit is also good, almost debt free, almost debt free. Okay. And this company, if you look at their businesses like TCS, like Infosys, like Mindtree. Okay. So their business is very good. Okay. If you go there to their website and look at their business model, excellent business. Okay. And about the promoter qualities, if you means this company's promoter is ex owner of Mindtree. You know Mindtree company, one of the best company. Mindtree is also multi-bagger now. The same owner is happiest mind. Okay. So uh, it is means promoter is also very good. Okay. So if you buy at 345 and keep it for 3, 4, 5 years, maybe like this. Okay. So maybe you will see 1,000 or 2,000 like this after 5 years or something like that. If they keep growing at the 40% rate. Okay. I just taken lowest AP growth. Okay. Not 83%. I taken very lowest. So conservatively, this is 345 now. So after 5 years, maybe this will be 1,000 plus.
Okay, so 300% return is also very good. So this is excellent stock as per me right now at present scenario. Okay, happiest mind technologies. Then the another one is the Root Mobile. Root Mobile has given their breakout here. Okay, and company is forming very good structure here. This pattern is very bullish pattern. Okay, technically. So and the company fundamentals, if you look, company's growth is 28%, 28%, 29% growth is excellent growth. Very low debt, almost nil debt. Okay, and uh, only the problem is this P by E. Okay, why this P by E uh, is high right now? Okay, because on the website their EPS is showing 3 rupees, 4 rupees like this. Okay, so I don't know why this. Only the problem here, only P by E. Okay, otherwise all parameters very good. If you go on their website, business, excellent business, competitive business. They provide the cloud computing and all that services, mobile. So excellent business, no doubt. So okay. So if you means take at current PE also and current EPS and the current growth, if I put in my fundamental model, then it is giving me 4,000 target from 1,200 after 5 years. Okay. So company may means it will be double or maybe triple after 5 years. Who knows? Or maybe more than that. Okay. So this is just based on means the parameter available now. Okay. So these are the stocks from my side. They can be become future multi-bagger. Okay. So this list I selected based on some fundamental parameters and based on some technical parameters. Okay. So they passed all my parameters. That is why I selected these stocks. Okay. So maybe these stocks will, after 5 years, if you look, maybe their stocks will become two times or three times, or maybe they will stay here. Who knows? Okay. Like they will test our patience or like that. Okay. So that is why if you want to invest in these stocks, okay, invest only your extra capital that is available with you. They will test your patience. Maybe tomorrow stocks will come down 20% or like this, and then you will blame me. Oh, this guy recommended me, and now this is 20% down or something like that. Okay, don't blame me. I am not an expert technical analyst or fundamental analysis. Okay, if you want to invest, do your own means analysis first. If you satisfied yourself, okay, then only you can invest. Okay, these are the my parameters. Okay, so they are passing my parameter. That is why I am showing you all. Okay, but you also yourself do the study and analysis. Okay, if I am going wrong, you can just message me. Okay, JK, this you told, but this is not passing the criteria. So no problem. You can send me a message or like this. Okay. So, but right now the stocks are passing my criteria. So I just given you all the list. Okay. So hopefully uh, the multi-bagger ideas, how to identify and how to check. Okay. It will be clear to you all. Okay. And before investing in any stock, do your study first and then only invest. Okay, I am not a SEBI register or something like that analysis. Disclaimer. Okay, I only study fundamentals and some technicals, and based on my experience, I saw these stocks has the potentials to become the multi-bagger. Okay, so any doubt you can ask me. Now our presentation is almost over. Any doubt, guys?
stop loss criteria. Okay, stop loss criteria, you can choose latest swing lows on the weekly or monthly chart. Okay, like this stock, like this Goldia. Okay, Goldia stop loss is big. Okay, one of the stock nucleus software, it has also given a multi-year breakout. Okay, it has also given multi-year breakout. I removed from my stock list because it is growing in very, growth is very low. Okay, but this is also probable this uh, multibagger. This is also probable multibagger. So this has given multi-year breakout here. Okay, this has given multi-year breakout. Now stock is just near the breakout. So if you want to enter here at 630, keep stop loss 510 around here. Okay, 510. So this is the, in this way you can keep your stop losses or something like that. Okay. For the screener, you can select stock trading all time high. Okay. So you will get stocks from there. All time high screener available everywhere. You will get the list of all time high stocks and then you can select from there. Any more questions? Okay, if there is no more questions, then I will stop here now. Okay. I will put this on my YouTube channel maybe uh, today or tomorrow. Okay, guys, thank you very much. Fundamental data, this website, screener.in. Screener.in, this website. On the Telegram channel, I posted this website.
Okay, guys, thank you. I'm closing. Thank you.